हाँ, तो हमारा जो आज का चैप्टर है वो क्लास 9th का चैप्टर है, वो है ग्रेविटेशन। बहुत सारी चीज़ें हमने आपको ग्रेविटेशन में बताई हैं। आज फिर हम थोड़ी सी चीज़ें आपको बता दें कि आखिर ये जो ग्रेविटेशन है वो क्या है। तो ग्रेविटेशन जो है वो क्या है, अट्रैक्शन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स जो है ना, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। और क्यों सारी चीज़ें नीचे गिरती हैं, तो हम लोग स्टूडेंट्स इस चैप्टर में जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। फिर हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ द ग्रेविटेशन फोर्स। फिर आपको पढ़ाएंगे यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, कैपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। इसके बाद का जो चैप्टर होगा वो है न्यूटन सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ इन द ग्रेविटेशन। फिर है फ्री फॉल, तो फ्री फॉल भी आपका इसी चैप्टर के अंदर में आएगा। क्यों चीज़ें बिना रुके गिरती हैं। आपने एक एलिफेंट और रैट को भी देखा था, किस तरीके से हम लोग उसको रियलाइज कर रहे थे। एक्सीलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी, इक्वेशन ऑफ द वर्टिकल मोशन, मास और वेट, थ्रस्ट एंड प्रेशर, प्रेशर इन द फ्लूइड एंड द बायंसी फोर्स, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी। स्टूडेंट्स, इस बार के सीबीएसई में आपका थ्रस्ट एंड प्रेशर ये हटा दिया गया है, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल हटा दिया गया है, प्रेशर इन फ्लूइड एंड बायंसी ये हटा दी गई हैं, ये आपको नहीं पढ़ना है। प्रिंसिपल ऑफ द फ्लोटेशन ये भी आपको नहीं पढ़ना है। डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी ये भी आपको नहीं पढ़ना है। तो कोई बात नहीं, आप तो बच गए पढ़ने से, लेकिन फिर भी हम आपको कुछ चीज़ें बताएंगे। एक जो आज के समय में बहुत बड़ी मिस्ट्री आई हुई है कि वन ऑफ द मोस्ट प्रोफाउंड मिस्टीरियस ऑफ नेचर इज व्हाई द ऑब्जेक्ट फॉल डाउन। क्यों चीजें गिरती हैं। ये बात सबको दिख रहा था, सबको समझ में आ रहा था, लेकिन कोई इसको सॉल्व करने के लिए आगे नहीं आया था। लेकिन एक साइंटिस्ट, आप सभी जानते हो उसका चेहरा, उसका नाम, अगर आप जानते हो तो लिख देना कमेंट्स बॉक्स में, क्योंकि मैं बताने नहीं जा रहा हूं आपको किस सेंचुरी में आया था वो, और क्या हुआ था, और क्या दिया था उसने। ये मैं आपके लिए छोड़ता हूं स्टूडेंट्स। तो एक चैनल है, उस चैनल पे आप लोग लिखते रहेंगे, आपको भी जानकारी बढ़ेगी। ग्रेविटेशन इज वन ऑफ द 4 फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर। और ये जो नेचर है वो एक्ट करता है बिटवीन ऑल द मटेरियल बॉडी। दुनिया में कोई भी चीज, कोई भी मटेरियल जो दो हो, चाहे आदमी औरत हो, चाहे बॉयज गर्ल्स हो, चाहे कोई दो आइटम हो, है ना, तो ये सभी के बीच में लगता है। तो स्टूडेंट्स, ये हैं वो दो लोग, वो दो महान हस्तियां। कितना स्मार्ट दिख रहे हैं। ये दोनों दोस्त थे भाई। ईयर, टाइमिंग सब पता है, ये मैं आपको बताऊंगा। तो जोहानेस कैपलर और सर आइजैक न्यूटन, एक का जन्म हुआ था 1571 से लेके 1630 तक, मीन्स 1571 एंड 1630 तक काम किया कैपलर ने। और 1643 टू द 1727, भाई बड़े थे ये। जोहानेस कैपलर जो थे ये आइजैक न्यूटन से बड़े थे, तो मार्गदर्शन किया होगा इन्होंने काफी, इसलिए अपने से बड़ों से काफी मार्गदर्शन लिया करिए भाई। इनकी कोट वगैरह तो बहुत अच्छी है। तो इन लोगों ने काम किया ग्रेविटेशन के ऊपर में बहुत सारा। चलिए देखिए क्या काम किया, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा समझते हैं। भाई ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ द अर्थ और द ग्रेविटी, द फोर्स जो होता है वो नेसेसरी होता है टू प्रोड्यूस द मोशन इन द बॉडी। ठीक है, फोर्स नेसेसरी होता है टू प्रोड्यूस द मोशन इन द बॉडी। चलिए हम इसको दिखाएंगे आपको कि कैसे जरूरत होती है, ये आपको दिखाते हैं। देखिए बेसिक से चीजें हम आपको बताएंगे, फोर्स कैसे जरूरत पड़ती है, कैसे बॉडी का मूवमेंट होता है। स्टूडेंट, आप सभी जानते हो क्योंकि दुनिया में सब कुछ आप लोग देख रहे हो। ये एक आपका ऑनलाइन सिमुलेटर है, जिसपे आप इंटरेक्टिव सिमुलेटर है, इस पे आप जो भी पढ़ते हो उसको प्रैक्टिकल करके देख सकते हो।
तो ये एक बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है जिसको आप लोगों को मैं दिखा रहा हूं। यहां पर जो लाइन है स्टूडेंट्स, दैट इज द फोर्स रिक्वायर्ड फॉर द मोशन। चलो मोशन की बात करते हैं हम लोग, देखते हैं मोशन में क्या होता है। ये आपके सामने है फोर्स, ठीक है, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अभी कितना है, अभी कितना है, 0 न्यूटन। चलो फोर्स बढ़ाते हैं, कितना कर दिया, देखो अप्लाइड किया फोर्स, ये किस में आ गया, मोशन में आ गया। क्या बात है, ये ट्रॉली तो चलने लगी भाई, चल पड़ी इसकी। तो आपने यहां से यहां तक अप्लाइड किया फोर्स, अब इसको यदि रोकना है तो इधर से अप्लाइड करेंगे फोर्स। रोकना है तो उसके अपोजिट अप्लाइड द फोर्स। भाई ये वैल्यू देख लेते हैं, इसको ओपन करोगे और डोर खोलना है तो अप्लाई करोगे फोर्स। अब इधर भी अपोजिट भी 15 न्यूटन और इधर भी 15 न्यूटन, तो नेट फोर्स कितना हो गया, कितना हो गया जी, नेट फोर्स 0 हो जाएगा। स्पीड देख लेते हैं, जब इधर किया फोर्स तो स्पीड देखो भाई, इतना मीटर पर सेकंड, इतना किया तो स्पीड थोड़ा कम। अब इतना ही इधर कर दो, स्पीड रिवर्स हो गया। ओके, रिवर्स में जाने लगी, यह हो गया। चलो यह वेट बढ़ा दिया, इसके ऊपर भी बढ़ा दिया, ये क्या हो रहा है, एक बच्चा इधर उस ऊपर बैठ गया, वाओ इंटरेस्टिंग, गिफ्ट के ऊपर बैठ गए भाई। पापा पूछ रहे कहाँ है, अरे ले पापा भी बैठ गए, ओ माय गॉड, ये तो बड़ा ही खतरनाक है। चलो भैया फ्रिज ले लो, फ्रिज, ओ गॉड इतना हैवी चीज, कितना स्ट्रांग है ये, वाह। तो मासेस हमने बढ़ा दिया, 50 केजी 40 केजी ना, इसका वेट पता ही नहीं है। चलो भाई इसका कर लेते हैं 40 केजी। अब इस पर हमने 10 अप्लाई किया 65 फोर्स, ठीक है, तो 80 केजी। जब मास बढ़ा दिया क्या हो रहा है, तो इस तरीके से आपने क्या देखा, तो स्टूडेंट्स आपने ये देखा कि कैसे जो है ये जो कह रहा है, ये क्या कह रहा है कि जो फोर्स होता है ना, यह बहुत नेसेसरी होता है टू प्रोड्यूस द मोशन इन द बॉडी। अगर आपने फोर्स नहीं लगाया ना तो कोई भी बॉडी आपकी मूव नहीं करेगी। तो बॉडी ड्रॉप फ्रॉम द हाइट फॉल टुवर्ड्स द अर्थ। चलिए ये भी हम लोग कर लेते हैं क्योंकि ये भी बहुत अच्छा बात कह रहा है भाई। बॉडी ड्रॉप फ्रॉम द हाइट, चलिए बहुत हाइट से एक बॉडी को ड्रॉप कर रहे हैं। ए बॉडी ड्रॉप फ्रॉम द हाइट, स्टूडेंट्स, हाइट इन ग्रेविटेशन। चलिए इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आपको समझा देते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट क्यों होता है, फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट क्यों होता है, ये आपको हम दिखाते हैं। All objects, when dropped from a height, fall towards the earth. This happens due to the gravitational force exerted by the earth on the object. Suppose you drop simultaneously a small stone and a cotton ball of the same size from a height. Which of the two will reach the ground first? We see that the stone reaches the ground earlier than the cotton ball. So, we may falsely conclude that the heavier objects fall faster than the lighter. Many times I have just raised the question, if the two objects you are just going to drop, you can do this, students, and after that the one hand is having the stone, another hand is having the cotton. Or the same height you are going to drop, and which one comes first? You have seen the stone. Due to the accelerations, due to the gravity. Ones. That is, the acceleration produced in heavier objects is more than in lighter objects. Galileo showed that all bodies, whether light or heavy, fall at the same speed towards the earth. Galileo explained that the lighter bodies fall at a slower rate due to the resistance of the air.
Later, So what is happening? Which one is going to stop? Resistance of the air. So who are given? The scientist Galileo. Robert Boyle proved this experimentally. He placed a coin and a feather in a long glass tube and Students, you do this activity. What you have to take a feather, any bird feather. Second, you take a coin, okay, and vacuum pump, okay. evacuated it with the help of a vacuum pump. Robert Boyle observed that when the tube was inverted, both the coin and the feather reached the bottom of the tube at the same time. What you have to do? You have he to remove. concluded You have to remove all the airs, and you have to be hold this bottle in the opposite direction. You see. that the acceleration produced in all the freely falling bodies is the same and does not depend upon the mass of the falling body. So here you have seen this both is coming. Here there is no air, so the same force is applying on this body. Students, so this is a very simple. If I talk about this game, and this is a very important to understand, and here if I talk about this is the one game. So in this you see, and so you put mass in a place in space, it warps space-time, and objects are not feeling a force of gravity, they're just following the natural curvature. And so this is a sheet of Lycra. Where do you get this? This is my old bike shorts. No, there's literally a spandex.com. You can get a sheet like this if you buy the sale stuff, so you don't care what it looks like, right? For like $20, maybe less, depending on the sale. And so you put matter, and it warps space-time. And so if I have another object, it also warps space-time. They feel that, and they're attracted to each other. And so that's Einstein's picture of gravity. Objects warp space-time, feel that curvature, and move accordingly. And so what he did, he has just taken the same masses of the objects and just keeping them, it is just going to attract each other. So this was given by the Sir Isaac Newton. Mass. Right there. On that. If you have more mass, it's going to bend space-time more. And so if you have objects there, they are going to respond to that, right? And so you put something there, now it's attracted. Now, in reality, that big mass would feel the warping of space-time by the marble too, right? It would move a little bit, but we usually ignore that. You know, the Earth makes the sun move a little bit, but So you have seen that the sun is going to attack everything in their own side because of having the great mass. So the great mass is going to attract it more. I have shown you that in this acceleration, that due to the gravity, and here related simulator, you see that what is happening here. So whenever we talk about that simulator is opening till that time, you see the experiment. So here the greater mass is going to attract the smaller one very fast. it's so small you can ignore it. The moon makes the Earth kind of wobble around a point 3/4 of the way from the center of the Earth. We usually don't account for that when we're looking at satellite motion. Well, instead of just letting go of one, what if Wow, I did a interesting. The sideways small motion? ball, छोटा बॉल जो इसके चारों ओर Now जाकर it घूम रहा है. orbits. Wow. Now it's losing energy, which See. wouldn't happen in the solar system, right? Not noticeably. There's some perturbations from other planets and things, but this one does lose energy in So spiral. this is why, because of that, the greater mass, so that it is coming in that way. Okay. So all the physics, math, and the earth science is that simulator is given here. Gravitation simulator.
So this is for study. It is just given. Here, students, are two masses that we have taken, and I hope that you have remember regarding this. I'm coming on that point. Third experiments, you see how this is going to be happening. If I don't push it as hard, it will do an ellipse for a while anyway. And so you can visualize how the things are going to be. so one of the things I thought of to do with this is when you study the solar system, all the planets are going around the sun the same way. Why is that? Did God decide that he only liked clockwise or preferred direction? The distant Wow, there are so many objects. You see how it is moving. You can do this practically with the pebbles and how it is coming. And when it's all said and done, It's because they're colliding with each other that you... the ones They the both ones are hitting going and up going. the wrong way get So eliminated. students, you have seen how the things Now, are we're just. also And looking here at- you this see, is where this analogy breaks if down. I'm talking about mass, the mass we are increasing or the distance we are increasing, that time also it is moving very fast. So this is what happens. Force mass 1 is 5.7 into 10 to the power minus 8 Newton. Mass if I increase, so that time you see it is increasing. Okay. And if you are going to increase the mass of this second one, that time it is decreasing. So this is happened. If I am talking about this 1 meter and this is 7 meter and you have increased the mass, what happens? From this one it is going in the opposite direction, it is reducing. So this is happens. Why? Because of the mass is increases. So students, here one thing I think it is clear to you, and there are many things are there. A body drop from the height fall towards the earth. I have shown you that one experiment. It is indicate that the earth exert a force of attraction that is called gravity on the body, and the earth attract all the object towards its center, and that force with which the earth pull the object towards it is called the gravitational force of earth or gravity. So students, force जो कि earth pull करता है object के ऊपर, तो उसको हम बोलते हैं gravitational force of the earth, या उसको बोलते हैं gravity. So gravitational force between the sun and the earth keep the earth in uniform circular motion around the sun. So gravitational force जो होते हैं वो क्या है? अर्थ है, रिस्पॉन्सिबल है, अर्थ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रेविटी, फॉर होल्डिंग द एटमॉस्फेयर एबव द अर्थ, फॉर द रेन फॉलिंग टू द अर्थ, फॉर फ्लो ऑफ वाटर इन द रिवर. कहने का मतलब अर्थ के ऊपर जो ब्लैंकेट है आपके एटमॉस्फेयर का, उसको होल्ड करने का काम भी कौन करता है? ग्रेविटेशनल फोर्स करता है स्टूडेंट. एंड द रेन फॉलिंग टू द अर्थ, ये भी पानी जो ऊपर से नीचे गिरता है वो भी आपका ग्रेविटेशन की वजह से होता है. फ्लो ऑफ वाटर इन द रिवर, वह भी आपके इसी ग्रेविटेशन की वजह से होता है. एंड कीप अस फॉर्मली ऑन द अर्थ, हम लोग अर्थ के ऊपर यदि खड़े हो पा रहे हैं तो ड्यू टू द ग्रेविटी. रिवोल्यूशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, दैट इज ड्यू टू ग्रेविटी ओनली. ठीक है. तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है बिटवीन द अर्थ एंड द मून? काउजेस टाइड्स इन द सी. आज जो मून का जो मूवमेंट है वो क्यों होता है? जैसे जैसे आपका जो मूवमेंट मून का होता है उसी की वजह से हमारे जो समुंदर हैं, समुद्र में लहरें जो आपने देखा हुआ है, वो टाइड का उठना, ज्वार और भाटे का उठना, जिसको हम लोग देखते हैं, लहरों का नज़ारा लेने के लिए हम लोग समुद्र के किनारे बैठते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं. तो ये कभी तुमने सोचा है कि टाइड्स आर हाई ड्यूरिंग द फुल मून एंड द न्यू मून डे? ऐसा क्यों होता है? तो टाइड की थोड़ी सी स्ट्रक्चर झलक हम लोग देख लेते हैं. टाइड आखिर होता कैसा है? बहुत अच्छा होता है. सी टाइड चलते हैं, यहाँ देखते हैं कि सी टाइड्स कैसा है. बहुत सुंदर नज़ारा होता है सी टाइड्स का. आइए थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं हम लोग. I'm Dr. Rob Brander, and I'm a surf scientist from the University of New South Wales. And in this episode, we're going to look at a different type of wave, and believe it or not, that wave is actually the tide.
Now the tide comes up, and you can see the high tide mark, and it goes back down the beach, and you can see it's low tide now, and it does that every single day. The tide is a wave. High tide is the crest, low tide is the trough. So there's a lot of water moving up and down the beach, and we need to know what is forcing that water. And there's two other things about the tide that are interesting. One is that the timing of the tide changes every day. High tide today is going to be different than high tide tomorrow. And the other thing is the amount that the tide goes up and down also changes every day. So why is that happening? Now the timing of the tide is all about the relationship between the Earth and the Moon. So the Earth is pretty big and the Moon is pretty small. But the Moon is big enough to exert a gravitational force on the Earth. And that causes the water on the Earth to bulge up towards the Moon. Now if you were standing somewhere on the Earth, remember, the Earth is rotating around. And what happens is you would experience two of those bulges each day. And that means that you'd have 2 high tides and 2 low tides every day. The other thing to remember is that as the Earth is rotating at a certain speed, the Moon is also orbiting around the Earth. And it orbits at a different speed, and there's a lag of 50 minutes between the two. So the high tide every day is 50 minutes later, and the low tide every day is 50 minutes later, because of the difference in the Earth's rotation and the Moon orbiting around the Earth. Tide range is the vertical elevation difference between the water level at high tide and the water level at low tide. The reason it changes every day not only is related to the Earth and the Moon, but now the Sun as well. Now, remember that the Earth and the Moon both orbit around the Sun, and sometimes the Sun and the Moon are lined up so that their gravitational forces act together and cause a greater tidal bulge on the Earth. And that creates bigger tides, which we call spring tides. Now, when the Moon and the Sun are at right angles to each other, their gravitational forces cancel each other out, and we get smaller tides, and we call those neap tides. So every 2 weeks we get really big tides called springs, and every 2 weeks we get smaller tides called neap tides. You may have heard of something called a king tide, and a lot of people think that king tide is a dangerous sudden surge of water. Well, it's not. A king tide is just a bigger tide. In fact, it's a bigger spring tide, because sometimes the Moon and the Sun are particularly close to the Earth. And when that happens, which is 2 times a year, your tides are going to be bigger. So they're nothing to worry about, they're totally predictable, and they're not dangerous at all. Well, we've just talked about what tides are and some of the characteristics of tides that you might find. So here you have seen that how the tide works, and I hope that it is very clear to you, and you find out the more effect of the Sun, Moon and Earth on our planet, how it is just having different, and what is the path, that is elliptical path with the Sun at once. Next chapters we will discuss about gravitation force is the weak force for all, how it is, and what is the universal constant and why the value of the universal constant, gravitational constant, is fixed, and why the small g that is going to change. So comparison in between the capital G and a small g we will see into the next lecture. So that is the